Hey guys, welcome to the Man of Education. My name is Surya sir, and today in this particular video we'll talk in detail about the TIS MPH, the Master of Arts in Public Health, and why you should pursue this particular program, guys. इसके बारे में career scope I already make the separate video, so watch that particular video. Career scope के बारे में सारी details दे दी है, all about MPH. Then I already made the video, guys. Go to the portal, watch that particular video. सारी details gather कर लो, and then watch this particular video. MPH क्यों करना है? So still if you have the question mark in your mind, guys, then watch this particular video. MPH क्यों necessary है? What is MPH? Why you should target the MPH program? Who are eligible and what are the career scope with respect to the MPH? Okay guys, so MPH, the Master of Public Health, it is nothing but all about the public health, all about the state of health, the efforts taken for the better of health of public through an organization. आप जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां से उनका वही एफर्ट होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, इस पर्टिकुलर स्टेट की हेल्थ, ओके, द मेन मोटो इज अबाउट द हेल्थ, दैट्स इट. अब उसके लिए पॉलिसी लगे, कोई पर्टिकुलर अवेयरनेस लगे, ओके, सो वो सारी चीजें जो भी मेंशन होगी, दैट इज ऑल अबाउट द एमपीएच. विल आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स. ओके, सो बेसिकली कुछ चीजें ध्यान में रखो. हेल्थ इज नथिंग बट द वेल्थ, benefits for entire population. Now it includes the protection with respect to any particular disease, the vulnerable disease, communicable disease, and any epidemic or pandemic. जो कुछ भी हो, protection about that particular disease, prevention, right? And thereafter the promotion, that is nothing but the awareness of that particular disease. कुछ भी disease आ रही है, कोई बात नहीं, कोई पॉलिसी लॉन्च हुई है, कोई इंश्योरेंस है, उसके रिगार्डिंग कैसे अवेयरनेस लानी है विद रिस्पेक्ट टू ऑल पॉपुलेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल, कोविड-19. यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. सो कोविड-19 जब आया, अब यहाँ एमएचए का रोल क्या हुआ? इट इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, केयर एंड मिटिगेशन. ये चार मेजर पिलर्स है विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल. सो एमएचए कैंडिडेट, उनका मेन मोटो क्या होगा? जो भी पेशेंट आया, ओके, द इंडिविजुअल पेशेंट अगर कोरोना पॉजिटिव है, ओके, सो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, प्रिवेंटिव केयर क्या होंगे, केयर कैसे करनी है, एंड मिटिगेशन. That's it. And with respect to the MPH, then we have to start from the scratch. We have to find the origin of that particular disease. Cell culture क्या है, उसकी stability क्या है, morbidity, mortality, communication, either it is communicable disease or not, policies and awareness and various etc. जैसे कोविड को ही ले लो, दवाई भी, कड़ाई भी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये काफी सारे अवेयरनेस थे, स्लोगन्स थे. तो ये क्यों? ये सारे किसके अंडर आते हैं गाइस? दैट्स नथिंग बट द एमपीएच. नाउ अगेन लॉट मोर थिंग्स, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, ओके, टेस्टिंग हो गई, ये सारे जो पार्ट्स आएंगे ये किसके अंदर आएंगे? द मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ. देयर आर द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जहां आपको प्लेस किया जाएगा, एंड यू विल बी वर्किंग देयर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है. राइट गाइज, सो एमपीएच और एमएचए, ये सिंपल डेफिनेशंस आपको मिल चुकी है, एंड आल्सो द डिफरेंसेस. Now, if you talk about the courses and eligibility with respect to the Master of Public Health, आपको 3 स्पेशलाइजेशन मिलेंगे guys. First one, the health administration. In that, you will learn about the human resources for the health, health legislation, health planning, supply chain management, कैसे होना चाहिए, and management of national health programs. Even you will learn about the epidemiology of that particular disease. You will learn about all the policies, insurance, finance. Okay, thereafter in health policy, economics and finance, you will learn about the applied health economics and the financing, health policy and system research, health financing including health insurance, ethics and legislation in public health, and economic evaluation in healthcare. So मोटा मोटा ओनली रकम के बारे में बात होने वाला है गाइस. हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ पॉलिसी, ये 2 चीज आप ध्यान में रखो, health insurance and health policy, that's it. Thereafter the social epidemiology. Now epidemiology of communicable diseases, epidemiology of non-communicable diseases, and the mental illness, health system research, gender health and rights, health education and the communication. So overall with respect to particular disease, जैसे टीबी का ही ले लो या कोविड-19 का ले लो. अब कोविड-19 के आने के बाद क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं. 2 डोज वैक्सीन, 1 डोज वैक्सीन, 3 डोज वैक्सीन, 2-deoxy, DRDO, बहुत सारे ड्रग्स भी मार्केट में आ रहे हैं, राइट? सो ये सब फेजेस जो है ये किसके अंडर आते हैं गाइस? नथिंग बट इन द पब्लिक हेल्थ. ओके गाइस, सो ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोप है, and lot of students switch to this particular department, this particular stream, because only this particular industry has the great growth, right? And there is also great demand. So what are the career options? You can work in all these organizations, some of the international organizations such as the WHO, John Hopkins, UNICEF,
CGC, FHI, research organizations such as BAF, Catholic Relief Research, Sambodhi Research and Management Institute, some of the government and non-government organizations such as Aga Khan Foundation, MOH, FAW, NRHM, NACO, NMMC, NPSU, K India, Perth India, Reliance, Surge, and lot more there. Okay, so what are the packages? If you talk about the packages, highest package you will get 8 to 9 lakh per annum, median standard 7 to 8 lakh per annum, and lowest 3.5 to 5 lakh per annum. And if you will have relevant experience of 3 years or 5 years in these all respective fields, definitely guys you will get more than these all figures. So that's it guys. बात कर लिया हमने what is MPH, who are eligible, career scope, and why MPH. Now still if you have question mark in your mind, then guys comment box is for you. Comment box में आप मुझे लिख सकते हो. We'll try to answer all of your queries. Now कहाँ से pursue करोगे? From the TISS, and for that you have to prepare for the TISNET, TISMAT if you are going for HRM and ODCL, and OPI वो तो करना ही है, and whatever selection criteria TIS will include. So call on this particular number or visit our website manoj.com/TISentrance, and for all exam updates and notifications you can follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram. So all link I mentioned in the description, kindly check those links. Don't forget to subscribe our new YouTube channel Manoj TISentrance, and on Insta bio I have provided a link for you, so you can book your free counseling session on that particular link. So that's it guys, all the best for your preparation. See you in the next video.